ओके नमस्कार आज हामीसँग इन्डियन प्रशिक्षक स्लाइड गिटारिस्ट एज वेल एज चतुरङ्गी वादक अमानो मनिष हुनुहुन्छ सो आज मेरो स्टुडियोमा चाहिँ उहाँलाई मैले आमन्त्रित गर्न पाएकोमा एकदम हर्षित छु आई एम भेरी थ्याङ्कफुल सो आज चाहिँ हामी उहाँसँग केही कुराहरू गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ उहाँको म्युजिकको बारेमा र उहाँको जीवनको बारेमा थोरै एउटा संक्षिप्त कुराहरू राख्छौँ लेट्स बिगिन सो नमस्कार मनिषजी Namaste. would you please provide a brief introductions about yourself so what do you like to introduce yourself you like as a yoga teacher or a musician Now I am both together at the same time. लेकिन मेरी शुरुआत म्यूज़िशियन की तरह हुई थी और मेरा जन्म हुआ था राजस्थान में जोधपुर में इंडिया में और मेरे फादर भी स्लाइड गिटार बजाते थे हवाइन गिटार एक्चुअली तो घर में ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था तो आई स्टार्टेड प्लेइंग दैट ऑन माई ओन बट लेटर आई स्टार्टेड सीरियसली लर्निंग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक from Pandit Brijbhushan Kabra ji and Pandit Basant Kabra ji when I was in Jodhpur. So initially I would say I was just a musician, but I had an inclination towards spirituality. And later I found Osho, I started reading him, I started understanding him, and I started experimenting with his meditations. Then I became really more involved into meditation, and then I shifted in 1999 to Pune, where I stayed for almost 25 years. There also I did all sorts of meditation practices, therapies, and groups. And at the same time, I got myself involved into music. I learned many things there about music. I worked with many musicians, international musicians, Indian musicians, local, everywhere I could find. हम एक्सपेरिमेंट करते थे हमारे बैंड्स हो गए हमने कई तरह का म्यूज़िक किया इंडियन क्लासिकल फ्यूजन सूफ़ी स्पिरिचुअल सारे टाइप के म्यूज़िक में चेक किया देखा एक्सपेरिमेंट किया So, what distinctions do you think exist between meditation and music as aspects of human life? देखिए म्यूज़िक उसी को इफ़ेक्ट करेगा जो म्यूज़िशियन खुद है पहले या थोड़ा सा उसके प्रति सेंसिटिव है म्यूज़िक के प्रति बाकी लोगों के लिए बाकी लोग सिर्फ एक लिसनर है म्यूज़िक के उनको भी इफ़ेक्ट करेगा बट एज अ लिसनर लेकिन म्यूज़िशियन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पॉसिबली करेगा तो अगर वो म्यूज़िशियन मेडिटेशन में भी है तो उसका म्यूज़िक अपने आप थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा वो चेंज म्यूज़िक में भी होगा उसकी और लाइफ पूर में भी होगा क्योंकि मेडिटेशन ओवरऑल आपको ट्रांसफॉर्म करता है चेंज करता है तो वो चेंज सब जगह आएंगे म्यूज़िक में भी आएगा लाइफ में भी आएगा सब जगह आएगा So, as a chaturangi player, there are few chaturangi players. So, in Nepal, we find very rarely. So, coming to my life journey, I've saw the persons to whom playing the chaturangi live. So, what made you decide to play this chaturangi? How you choose these instruments? Like I said, I was already playing slide guitar in my childhood and later it was a natural pick for me because I got associated with Pandit Devashish Bhattacharya who designed this chaturangi and I got it from him so it came into my life like this. Okay. So, what kind of music atmosphere did you grow up? Just you introduced past about your family story.
So around your atmospheric, surrounding your family, your friends. I was around musicians. I was around, let us say, good people Yeah. always. तो वो बचपन से था, Uh, और बाद में भी और अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे, काफ़ी लोग मिले, और आज आप लोगों से भी yeah. मुलाकात हो गई, और आज यहाँ भी हम आ गए. Mm. Okay, that's very cool to know. So that's my next question is that what is your opinion about the state of the Nepali music industry? So far you are not you have not spent long time in Nepal. Though comparing to your Indian musical culturals and some aspects of Nepal's, so what the differences do you find, and what the suggestions, or as a musicians, what kind of advice do you like? Well, I find musicians in Nepal very very creative, good-hearted people who are sincerely into their profession, music. जो मुझे लोग मिले हैं वो तो ऐसे ही हैं, Mhm. और सब अच्छे लोग थे, सब अच्छे लोग हैं, बहुत क्रिएटिव हैं और इनोवेटिव भी हैं, और अच्छा काम करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं. पर Exactly. इंडस्ट्री जो म्यूज़िक का जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है, वो पता नहीं इतना अच्छा है या नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर शायद नहीं है नेपाल में इतना अच्छा. वो तो इंडिया में भी बहुत अच्छा नहीं है, और शायद कहीं भी इतना अच्छा नहीं होगा दुनिया में. Comparing to the international, yeah, हाँ, with पर the, इंटरनेशनल में भी कोई ख़ास अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूज़िक का नहीं है, इवन इन यूरोप एंड अमेरिका. बट बेटर कंडीशंस हो सकती हैं, पर बहुत अच्छा फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं बना है शायद दुनिया में, क्योंकि म्यूज़िक को कोई प्रायोरिटी देता नहीं है नहीं, इतना. exactly. तो वो तो अपने आप आर्ट लवर्स, अपने म्यूज़िक लवर्स खुद खुद कुछ करके मैनेज करके कुछ करते हैं खुद से. Could say. तो उतना गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर थोड़ा सा है, ऐसा कुछ कुछ है. So it is all it is operated all from the private sector, or यस, प्राइवेटली. the entrepreneurs, private या entrepreneurs. Uh, so, Swamiji, how many countries do you have visited? नॉट मैनी, बट जस्ट लाइक आई हैव बीन टू ईरान 3-4 times Okay. as a member of my Sufi band. Uh, We played in Sufi festivals there, stayed long time there, and we had an album also there. okay. Then I went to Russia also, Wow. stayed there for a month or two. Then also experimented with musicians there, collaborated with them, doing, and also it was a meditation festival, so we did meditations also. And this Sri Lanka also I went one time, so I had good experiences. Okay. So, how have been the last your sessions we have uh, organized, or you have there in the Sangeet Sadhana yesterday? Sangeet Sadhana is a very good institution, but their infrastructure is also in the process of Yeah. building up now. So they need some funds from government or whatever. Exactly. So they are in the process now. अगर वो अच्छे से कर लें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ें, तो अच्छा हो सकता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ये भी सब अच्छा ही हुआ, अच्छा कर रहे हैं जो भी है. तो इस नेपाल को और इंडिया को दोनों को ही आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना चाहिए. ठीक है. So we have now end the first sessions. So thank you, Swamiji, for your precious time being here. We know that the life is all about the time, thoughts, and the energy. So harmonizing these all the things, the human lives will be completed. So for your precious times, for your hour, I would like to thank from the inner core of my heart. Thank you. Same here, Naveen bhai. I saw you playing yesterday. You are a good musician also. You are doing so many good Thank you, things, sir. and you have a wonderful setup here. So all my best wishes are with you, that you do very well.
and it was a real pleasure and honor to come here and share some thoughts and music with you. Thank you so much. Thank you so much.